अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे एहतियाती तदबीर के बारे में वायरस के हवाले से कि क्या क्या एहतियाती तदबीर आप कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। आसान से हल हैं, आपने करने हैं और इंशाअल्लाह ताला आप इस वायरस से बच जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो आपके दोस्त के पास भी पहुंचे और वो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके और इस वायरस से महफूज रह सके। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा नेक्स्ट, इस वीडियो को देखिए और जिस तरह ये हाथ धोएगा इंशाअल्लाह ताला उसी तरह ही आप हाथ धोएंगे तो जरूर इस वायरस से आप बचेंगे। तो वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपसे मुलाकात होती है। Today we're going to be talking about hand washing. Why are we doing that? Well, it turns out these hands are really amazingly efficient at transmitting most of the common infections we see in children and adults. So you do not need antibacterial soap. The temperature of the water doesn't matter. It needs to be 20 seconds. It's a matter of just getting the surfactants, the soap, making sure that you've lifted all the bacteria off the skin. It's like when you wash your clothes, you can't wash your clothes for 10 seconds. You wash your clothes for a while in the soap, so the soap particles lift the dirt off. In the hospital, we are maniacal about hand washing. You have to wash your hands before entering a room. You must wash your hands after leaving the room. You know, all of the disciplines teach hand washing, to be honest with you. So the surgeons and the obstetricians have formal hand washing programs for how you wash your hands before entering the operating room, because that's such a high risk situation to go in there with dirty hands. जी तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो वायरस है ये आगे न फैले, ताकि हम इससे महफूज रह सकें। अल्लाह हाफिज।